कंस्ट्रक्शन खत्म होके बाजू रख देते, क्योंकि हमारे पास जिस तरह के सॉफ्टवेयर बहुत कुछ है, लाइक हम लोग डिटेलिंग करने के लिए ऑटोकैड का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग 3D मॉडलिंग करने के लिए रिवेट आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करेंगे, और एनालिसिस के लिए स्टैड प्रो का इस्तेमाल करेंगे, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए प्राइमवेरा का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे बहुत कुछ एप्लीकेशंस अवेलेबल है अभी। इसीलिए जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट हो रहा और कंस्ट्रक्शन का टाइम हो रहा, वी कैन सेव इट, राइट? होप यू everybody get my point, right? Yes. Actually, so benefits of Staad Pro. Just now I explained you how we get benefited about this stuff. So it will save the time and money and reduce the errors and increase live loads in the software model. So we will analyze and we will simulate it. Then we will provide some alternative designs, and we will get automatic slab load generations and automatic wind load generation and automatic moving load generations. So before the software comes us, so we used to do manual calculations like wind load by using code books, again like moving loads and seismic loads. These are loads by manually we will do that. Now we get Staad Pro and ETAP softwares. इसमें पहले ही रहता है बाय डिफॉल्ट, ऑटोमेटिकली वो आपको लोड जनरेशन करके दे देता है, बस हम लोग उस पे कहाँ पे अप्लाई करना है, वी हैव टू मेंशन दैट, दैट्स इट. द सॉफ्टवेयर विल डू ऑल एनालिसिस एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट्स. एंड नेक्स्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स वी विल गोइंग टू डिजाइन टुडे. We will going to design slab design, and we will going to design beam, and we will going to design column, and we will show you the how footing design will we do, right? So see, so what type of structures we can design in and we can analyze this in Staad Pro. So we can analyze buildings, and we can analyze staircases, we can analyze water tanks, and we can analyze shear walls also, and we can analyze solid modelings like dams and projects and like jail walls, like this type of all we will do in Staad Pro. See, types of structures, like what type of materials we can apply in Staad Pro and what type of analysis we can do, I will explain you. So we can apply timber design also, and we can apply steel also, we can apply concrete also, and we can apply aluminiums also. These 4 materials will be available in our Staad Pro, right? So for concrete we use IS 456 code book. Like that we have some code books for Indian standards. So for reinforced RCC design we use IS 456. For steel design we use IS 800, and transmission tower designs like IS 802.123 parts will be available. And dead load IS 875, live load IS 875, wind load IS 875 part 3. So live load के लिए पार्ट 2 रहेगा और डेड लोड के लिए पार्ट 1 रहेगा. सो ये सारा बस याद रखना कि हम लोग जब भी प्रोजेक्ट के लिए अभी जाएंगे, सो वी हैव टू यूज दिस कोड बुक्स, वी हैव टू नो दैट दिस कोड बुक्स, which code book, which for analysis we are using it, right? Just note down it, or else you can take screenshot also, right? IS 875 wind load and live load, dead loads, snow loads, part 1, part 2, part 3, part 4. We use these code books, and we should know how much reinforcement and which diameter of the reinforcement we should use it in our projects. So minimum रहता है 6 mm वाला बार रहता है, और मैक्सिमम रहता है 50 mm वाला बार रहता है. तो जो भी कंस्ट्रक्शन के फील्ड में आएंगे हम लोग यूज करेंगे 6 mm से लेके 25 mm तक यूज करेंगे, वो मैक्सिमम होता है, इसी से ज्यादा कभी भी नहीं होता है. सो वी यूज मोस्टली for columns 12 to 20 inches, for beams 8 to 20 inches. तो इसका यूनिट वेट भी रहता है हमको, यहाँ पे ये भी आज डिस्कस करेंगे. और we know how to give clear cover for which design we are giving. For beam we have to give 25 mm, for column we have to give 40 mm clear cover, and RCC slab 50 mm, staircase 50 mm और footing 50. So 15 staircase के लिए रहेगा और RCC के लिए 15 रहेगा 15 mm, राइट? सो क्लियर कवर का सब कुछ जानते हैं ना सर, क्लियर कवर क्या होता है? सो एनीबडी नोस व्हाट इज क्लियर कवर?
If anybody knows, just type in yes. If anybody doesn't know, just type in no. I think freshers engineer will be there, so they should know this. फ्रेश ग्रेजुएट्स कॉलेज से बाहर आते हुए आपको सब कुछ पता चलना चाहिए, जो भी हम सीखेंगे वही आके बाहर पे हम अप्लाई करेंगे. सो मोस्ट ऑफ द पीपल नोस व्हाट इज क्लियर कवर, राइट? तो क्लियर कवर होता है जैसा कि हम लोग स्टील बार रखते हैं ना, वो बार से कंक्रीट छुपा हुआ होता है. तो वी सराउंडेड दो स्टील बार्स विथ कंक्रीट. So how much distance we will the surrounded by the reinforcement, that is clear cover, right? For this we have the standards. For beam 25 mm will be there, and for column 40 mm will be there. For RCC slab 15 mm, for straight case 15 mm, for footing 15 mm. We have to specify these value to the Staad Pro. Okay, then what type of slabs will be there? Like one way slab, two way slab. So one way slab कब यूज करते हैं हम लोग? जब भी two opposite sides of columns having larger distance is greater than 2, Lx by Ly, like shorter span by longer span is greater than to 2. जब भी हम लोग इसको वन वे स्लैब यूज करते हैं. अगर कॉलम्स पास में है कि जैसा कि less than 2, then we will use two way slabs. So I will show you the details. So one way slab ऐसा रहता है, इसका डिफ्लेक्शन. वन वे स्लैब में हम लोग यूज ओनली main reinforcement bar in one direction and distribution bar in another direction, which is the shorter distance. We use their main reinforcement bar. So main reinforcement bar का मतलब होता है कि जो भी हम लोग बड़ा वाला like 12 mm, like 16 mm बार यूज करते हैं. स्लैब में तो मैक्सिमम 10 mm बार ही यूज करते हैं हम लोग. सो जो 10 mm बार रहेगा वो शॉर्टर डिस्टेंस में हम लोग यूज करेंगे. जो 8 mm बार होगा, मतलब जो 10 mm से कम वाला बार यूज करेंगे, वो लॉन्गर स्पैन में हम लोग यूज करेंगे इसको. सो इसमें हम लोग ये वन वे स्लैब में यूज करेंगे. if we go to two way slab, we use both side only main bars, like same dimension and same diameter bar will be used by two directions. So one way slab and two way slab. And various forms of loads we can assign in our Staad Pro. So we can assign point load, we can assign UDL, uniform distribution load, and we can assign triangular loads and trapezoidal loads also, like uniform variable loads. If think the load will start with 1 kilonewton and it goes up to 3 kilonewton, then it comes down to 1 kilonewton. Like that we have to apply this load. We will use triangle load. If we think the load will start with 1 kilonewton, it goes up to 10 kilonewton. We use trapezoidal load. And again, like this type of loads also be available. Dead loads. डेड लोड का मतलब होता है जो भी फिक्स्ड लोड होता है इसके ऊपर, उसको डेड लोड बोलते हैं. फॉर एग्जांपल बीम के ऊपर आएगा डेड लोड वॉल, राइट? सो वॉल ही आएगा ना सर बीम के ऊपर, और कुछ आएगा क्या? वॉल और विंडोज आएंगे. सो इस टाइप ऑफ लोड्स वी कॉल एज ए डेड लोड. एंड लाइव लोड्स, weight of persons, movable partitions, dust load, weight of furniture, right? And wind load, thrust of wind on high rise structures. Wave load, ये तो ब्रिजेस के पास आएगा, और शी शोर में जो भी हम लोग रिसोर्ट्स वगैरह कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं वहां पे हमको वेव लोड भी लगेगा. और एर्थक्वेक लोड रहेगा, फोर्सेस काउज्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ बिल्डिंग. तो सेस्मिक लोड बोलते हैं इसको हम लोग. जो भी एर्थक्वेक के पास में एक ऑरिजिन पॉइंट रहता है, वो ऑरिजिन पॉइंट से हम लोगों को एक, जैसा कि अब मान लो कि यहाँ पे एर्थक्वेक स्टार्ट हुआ था, इसके वेव्स हमको ऐसा बढ़ते आया होंगे. So how much distance we got it? Like these wave we called as a seismic wave. तो इसके लिए इस type of analysis को we called as a seismic analysis, right? And water pressure को हम लोग Staad Pro में बोलते हैं hydrostatic load. So these type of loads we can analyze and we can apply to our structures, right? So what we can analyze in Staad Pro, we can analyze buildings. So buildings में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर कर सकते हैं. कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए डेड लोड देंगे, और लाइव लोड देंगे, और विंड लोड देंगे, और सेस्मिक लोड देंगे. ये चार तरह के लोड्स
we apply in on it and we will get the result. So डिजाइन क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, स्लैब कर सकते हैं, बीम कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं और फाउंडेशन कर सकते हैं. ये बिल्डिंग डिजाइन का होता है. अगर इफ यू मूव टू स्टेयरकेस, सो स्टेयरकेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेयरकेसेस रहते हैं, लाइक स्पाइरल रहता है, एल शेप रहता है, डॉग लेडर रहता है, यू शेप रहता है. दिस टाइप ऑफ ऑल स्टेयरकेसेस वी कैन एनालाइज इन स्टैड प्रो. एंड अगेन we can analyze water tanks like overhead water tanks, ground water tanks, underground water tanks, and rectangular type, circular type, square type, conical shapes. So ये सारे चीजें हम लोग स्टैड प्रो में एनालिसिस कर सकते हैं. और शेयर वॉल भी कर सकते हैं, जैसा कि लिफ्ट का वॉल रहता है, जेल कंपोनेंट वॉल रहता है, रिटेनिंग वॉल्स रहते हैं, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर वॉल रहता है, एर्थक्वेक रेसिस्टेंस वॉल रहता है, बैंक लॉकर्स रहते हैं. ऐसे सारे वॉल्स को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, जैसा कि हमारे बिल्डिंग में रहता है. तो शेयर वॉल कभी भी इट विल गेट एनी कॉर्नर्स में ज्यादा लोड आता है, जब भी हम लोग इस शेयर वॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे. तो उसको भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं हमारे स्टैड प्रो के अंदर. लाइक सॉलिड मॉडलिंग्स, सो डैम्स के लिए, लाइक प्रोजेक्ट के जो गेट्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे भी हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं. पॉन्ड्स, फील्ड ग्राउंड, लेक्स, ये सारा हम लोग इसमें एनालिसिस कर सकते हैं. और हम लोग स्टील स्ट्रक्चर का भी एनालिसिस करते हैं, लाइक वेयर हाउसेस रहते हैं, हमको शेड्स रहते हैं, सो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म्स रहते हैं. ये सारे चीजें हम लोग यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर का भी एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग. लाइक ट्रांसमिशन टावर्स भी रहते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन टावर्स, लाइक ब्रिजेस पे भी हम लोगों को वायर ब्रिजेस रहते हैं, लाइक तो वो टाइप ऑफ ब्रिजेस को भी हम लोग इसमें एनालिसिस कर सकते हैं. और स्टैड प्रो में वर्कफ्लो कैसा रहेगा हमके लिए, सो स्टैड प्रो में वर्कफ्लो रहेगा, पहले एक नया फाइल क्रिएट करना चाहिए. सो आफ्टर दैट वी विल क्रिएट द ज्योमेट्री, लाइक हाउ मेनी floors we required, how many columns we required, how many beams we required, how many slabs we required. So we will create the geometry. Then again we will define the properties, like structures shape क्या रहना चाहिए, what type of shape it is, and what type of size is it, and how what type of material it is. We will assign the properties. Then we will assign the supports, what type of supports we are assigning the structure, like fixed support, like roller supports, like pinned supports. This type of supports we will assign it. Then again we will go to loads, what type of loads we can give it in our structures, like dead load, live load, seismic load, and wind load. So these 4 loads we will be apply for our building, right? If you go for the bridges, then we will apply the moving load there. So one vehicle comes in the bridge and it pass over the bridge, so we think it's a movable load, right? तो आएगा लोड और कंटिन्यूसली ये ब्रिज के ऊपर जाता रहेगा आपके लिए. सो इसको मूविंग लोड बोलते हैं. वो मूविंग लोड के समय हमको जैसा बेंडिंग मोमेंट आता है वो हम लोग इसमें एनालिसिस कर सकते हैं. ऐसा वाटर टैंक रहता है, इसके लिए हाइड्रोस्टैटिक लोड यूज करते हैं हम लोग. ओके, सो आफ्टर दैट वी विल गो फॉर एनालिसिस एंड वी विल डू पोस्ट प्रोसेसिंग. पोस्ट प्रोसेसिंग में हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा कि शेयर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. So how much shear force we will get, and what type of bending moment diagram we will get, and how displacement, how much deflection it will get. So we will get these post processing. Then we will go for design, what type of design we require, like steel design, concrete design. So for this project we are doing concrete design. So after selecting design, we used to select the concrete, then we used to select code book. So what type of code book for concrete, what type of code book is available, sir? Please type in chat box. For RCC design, what type of code book will available and what type of code book will use? Right, Shubham, very good. IS 456. Yes, exactly. Very good. एग्जैक्टली आप सब लोग फॉलो हो रहे हैं मेरी क्लास को और आप सब लोगों को पता भी है ये सब कुछ. सो आफ्टर दैट वी सेलेक्ट द कोड बुक एंड वी नीड टू असाइन द पैरामीटर्स, लाइक व्हाट टाइप ऑफ पैरामीटर्स वी विल स्पेसिफाई टू द आवर स्ट्रक्चर, लाइक क्लियर कवर कितना होना चाहिए और व्हाट टाइप ऑफ कंक्रीट वी आर यूजिंग, लाइक M20, M10, M15, M25 ग्रेड, व्हाट टाइप ऑफ कंक्रीट वी विल असाइन, एंड व्हाट टाइप ऑफ स्टील, कौन सा स्टील हम लोग यूज करें यहाँ पे, लाइक
FE415 ग्रेड का रहता है ना, ये यूज करे कि नहीं और दूसरा कोई यूज करे, ऐसे सब कुछ यहाँ पे हमें असाइन करना पड़ेगा. देन अगेन वी नीड टू सेलेक्ट द कमांड्स. So what we need to get from this Staad Pro result, like beam, column, slab, shear wall, and we can use takeoff also. How much steel required for this project and how much cubic meter of concrete we require for this. So we can get that also. Then complete analysis report. This is the workflow in Staad Pro. ये रहता है आपको Staad Pro का workflow. अभी मैं आपको एक प्लान बताता हूँ जैसा रेविट आर्किटेक्चर में हुआ था. So everybody can see my screen, right? This is our plan. We have taken 1200 SFT plan. So for 2 bedrooms, 1 kitchen, 1 puja room and 1 living room and 2 bathrooms and 1 veranda. This is our plan. ए प्लान को हम लोग AutoCAD में इसका स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग मतलब कॉलम का डायग्राम कैसा क्रिएट करते हैं, हाउ वी विल ड्रॉ ए कॉलम डायग्राम. So like this we will draw in AutoCAD. So for center lines we have to take it and we have to take dimensions from column center to center, right? Oh. Babu sir, please unmute yourself. Sorry, mute yourself. We are getting some disturbance. Babu sir, please. Thank you. So, can anybody tell me what is the maximum distance between 2 columns? Is there any idea? $18 feet, right? Can you please tell me in meters? एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए मैक्सिमम कितना होना चाहिए? Okay, so yes, exactly, Anand Tiwari sir. विजय पारदन सर, 10 मीटर डिस्टेंस, इट्स वेरी लॉन्ग स्पैन. इसके लिए थोड़ा लाइफ टाइम खम जाएगा आपको. यस, एग्जैक्टली 3 मीटर से लेके 5 मीटर तक ज्यादा यूज कर सकते हैं. तो ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर तक ये सेफ रहेगा बिल्डिंग और इसका लाइफ भी बहुत ज्यादा रहेगा. अगर आप 5 मीटर से 8 मीटर तक भी जा सकते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होना चाहिए, तो ये रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहेगा हमके लिए. सो 5 मीटर इज द सेफेस्ट डिस्टेंस. सो आई हैव टेकन हियर 4.4 meters, right? So you can see so total 12 columns I got it. For this is my veranda and this is also my slab, and here I am not taking any slab because I am getting here staircases, right? So इसको हम लोग Staad Pro में कैसा करते हैं वो अभी हमको दिखाएंगे. अब अभी मैं यहाँ पे सारे इक्वल डायमेंशन वाले कॉलम्स ले चुका हूँ. तो अगर आपके डिजाइन के अनुसार आप चेंजेस भी कर सकते हैं और ये कॉलम ओरिएंटेशन भी रहेगा. जिधर लोड ज्यादा आएगा उस साइड पे हम कॉलम को ओरिएंटेड करके दिखाएंगे. अभी मैं सारे हॉरिजॉन्टली करके हूँ क्योंकि मेरा बीम प्लेसमेंट भी परफेक्ट होगा ऐसा रहने से, राइट? सो अभी इसमें हम Staad Pro में जाके दिखाएंगे कि कैसा होगा. तो पहले Staad Pro में जाएंगे. वी नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट new project here. So new project, then we have to specify the name. What is the our project name? Let's say I am making G plus I building, and here we need to specify the location where this project have to save. So
I am going to give some show my desktop. This project will be going to save in my desktop. Then what type of lengths units we are going to use, like inches, feet, millimeter, centimeter, decimeter, and meters, kilometers. So mostly we use meters only because SI units and standard will be all in meters. So meters we will going to take it. And what type of loads we are going to assign it, like kilogram, metric ton, newton, decanewton, kilonewton, meganewton, kilopound. These all loads are available. So this project I am going to take kilonewton load. So after that we click next. Then after that, if here we have three options to create the structure, like copy paste method and nodal method and graph, like coordinates. So we can assign by coordinates also, but I am taking here structure wizard. We will get by default one structure here. So just click open, then we'll open the structural wizard directly. It will ask the what type of structure you require, like truss model, frame model, surface plate model, solid models, composite models. Like this type of options we will get. Then we will select here frame models. So frame models में भी रहेगा आपको बे frame, grid frame, floor grid. This type of frames also available on our Staad Pro. So I am taking bay frame. मतलब मेरे को नीचे नहीं चाहिए, मैं वहां पे जस्ट फिक्स्ड सपोर्ट दूंगा. जस्ट क्लिक इट, डबल क्लिक ऑन बे फ्रेम ऑप्शन, देन यू विल गेट हियर डिस्टेंस. So right, so how much length you required for this our project? So I required length here. So first we need to know the length. You can see it 9.3. I'm taking just 9.3 center line to center line. It's almost 8.8 something value I will take. So I'm just giving here that value. I required 9.4. And how many bays we required it? How many bays matlab how many rooms we required in length? So you can check. So how many rooms we required it? Just 2 rooms. It's called as a base. So I assigning 2 bays I required. Then how much building height you required it? I required it 18 meters. Then 18 meters, how many bays you required? So again here 12.11.8. Here I required 3 bays. It will show equal distances. See 2 and 4 columns. I required here just 2.7. For that we need to change here. 3 dots will be available here. So just click it there. And what type of distance? First I required 4.5 meters. Then again I required 4.7. Then again I required 2.4. So we have to calculate here exact value, how much distance. So just check it. 4.5 plus 4.7 plus 2.4. 11.6 we have to assign here. Change properties 11.6. Now you can go and change here. I required first one 4.5, again 4.7, then I required here 2.4. Okay, see I required, and we get structure. After that we just close it. And would you like to merge this prototype into Staad Pro? So click on S. It will import the directly Staad Pro. So here where you get this model, I am going to place it in where origin point. So just click in OK. Then our structure will be created. So after that, what we have to specify, our structure is created. Then we created new file and we created geometry also. The next step is define properties. So what type of properties we will define it? So first, so for properties, click on general option. Then here option is define. So just select this define option.
take what type of column you required in our structure. Like I am taking here a rectangular. For rectangular, I am taking column size is 0.3 meter into 12 inches into rectangle 0.3 meter into 0.45 meter. Just what type of material you require in this column: steel, stainless steel, aluminum, concrete. I'm taking as a concrete column it is. So just click add option. So I required a beam also. For beam I'm taking 0.45, 0.3. Add. After that we created beam and we created column. After that I required slab thickness. So for that we use thickness option here, and how much thickness we are going to specify in our slab. I'm taking just 0.125. I'm taking this. So we created properties, then just close, right? So you can see in our 3D render view this project how it will looks. So is there any properties available? We just created a beam and columns. Now I am going to create slab further. So I am going to create slab here in the first story. So first story को select करने के लिए हमको यहाँ पे एक 4 node plate option रहेगा. So we have to select this 4 node plate option and just click this node by selecting node to node. Yes. So I created it. If you want to, you can show in render view. If you get any confusion by selecting these node points, you can use another option here. So just go front view. So select front view from this option. After that, select what properties and what type of structure and which structure you want to show. So just select these. I want to show this structure, and remaining this structure will be hidden. How? Just select here section view option, then select to view option, then view highlighted only option, then okay. You can see everything will be hidden. Then you can select directly or right. So see, right, what we did here, I created slab for my staircase also. Actually I doesn't require here, so I'm going to delete this slab and again I will create it. Just select and this plate will be deleted. And then again I'm going to select what type of structure I just want to see. So select beam option, select this, only select these beams, and select cut section option, select section view highlighted only. Okay. Then select 4 node plate. First I will create one slab from these 4 nodes like my rooms. After that I will create only for my balcony. So now you can see clear. So I will just copy this structure to all my floors. Then again go section view and select option show all. It will shows the all our properties and all our structure. So just select this plate by selecting here 4 node plate select option. So plate cursor, just click here and select this plate and control, and then select this plate also. Use translation repeat option. After selecting this translation repeat option, which direction we use to copy this? We need to copy which direction? You can see in my screen, the Y direction will be in outside. So I'm selecting Y direction, and how much each floor height will be there. We need to specify here. I am using 3. First let me check this, it is 3 meter or not.
So just select display option. It's a 3.6 meter. Again, you can go and you can remove all dimensions. Will you remove? If you want to see just these column height, you can select this column. यहाँ पे हम लोग एक कॉलम सेलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमारा जो कर्सर है ये प्लेट कर्सर है. इसको हम लोग बीम कर्सर के पास चेंज करेंगे. You have to change the cursor type plate cursor to beam cursor. Then you can select column. Then go to dimension option and use display option. See, you will get only those column heights which you selected. So 3.6 meter is the my slab height. So again I am going to select plate cursor. Then I am selecting my plates. I am using this translate and repeat option. Y direction 3.6. And how many slabs I required? 1, 2, 3, 4. I'm selecting here 4 options. Just OK. You can see now all our structure get beams, columns, and slab also. Now we are going to assign properties to this. So for assigning properties, just click on General 0.3245. It is my complete columns. So for columns, selecting, I'm going to select option. All my vertical lines will be the column. So again I selected to assign to selected beam, assign OK. Then again I need to select the beam option. For this beam, I need to go to select option and beams parallel to X direction and beams parallel to Z direction. Then assign yes. So आप अभी देख सकते हो 3D रेंडर व्यू में असाइन हुआ कि या नहीं. बीम्स कॉलम्स तो असाइन हो गए, स्लैब असाइन नहीं हुआ है because here I am not getting any thickness of slab. So for that reason we go select plates and I used to pick this option assign to view. How many plates available in this my structure? Apply those thickness to all my plates. I am using assign to view, assign yes. Now you can see in render view. So you can see here thickness also we got, right? After that, what we need to do? Assign supports. Fourth step is assign supports. So for this, I am going to select support option here. Support, create. So I am using fixed support here. If you want, you can use pin support, fixed, but it's a like roller supports. So we can release any one direction from here clicking. So for this project, I am going to assign fixed support. Add. So for this support, I am taking front view and I am selecting these all nodes, which is under my structure. So assign yes. So you can see in isometric view, all columns will be assigned as a fixed support. Then you can see, okay. Then what we need to do again, which step? Define the loads. So for defining loads, select define load option here. Then go to first definitions. So यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको. Actually जब भी हम लोग एक बिल्डिंग का सारा स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए जा रहे हैं, so whenever we used to design in Staad Pro for building, if you want to give any seismic analysis and seismic design for your building, you need to assign the first seismic analysis only. So seismic के अलावा कोई भी पहले अगर आप analysis के लिए लोड असाइन कर दिए ना, वो आपको लोड नहीं ले पाएगा और analysis भी नहीं कर पाएगा, वो आपको एरर बताएगा. You need to assign first seismic load बोल के आपको एरर बताता रहेगा वो आपके लिए. तो इसी के लिए पहले हम लोग seismic analysis का लोड ही असाइन करेंगे यहाँ पे. So for that we need to go the seismic definition option and select and click add option. So here I am taking seismic analysis for IS 1893 2002 to 2005 code. So just select it. If you want to assign any accidental loads, like जब भी
वर्क साइट में कोई मिशनरी गिर जाता है, लाइक कोई एक्सप्लोड हो जाता है, दिस टाइप ऑफ लोड्स वी कैन असाइन include accidental loads. If you doesn't require, just leave it here and then click generate. It will generate, and we need to select the zone, which zone you are. So you can select by selecting zone, first zone, second zone, third zone, fifth zone, like that.